and effect relation. Current produces magnetic field, so magnetic field should produce current, something like that. So he was doing some experiment, और वो आपने पढ़ रखा है क्लास 10 में, पढ़ा है? Faraday experiment? Yes, sir. याद नहीं, okay, no problem, कोई बात नहीं, we'll come back to that. So उसमें कुछ जरूरत पड़ेगी हमें, पहले वो कर लेते हैं. Magnetic field lines we saw in the last chapter, always in the form of closed loop. Starts from the North Pole, terminates on the end towards the South Pole outside. Always किसी भी closed loop से जब कोई भी magnetic flux calculate करते हैं, it is always zero. Magnetic flux passing through any closed Gaussian surface or closed surface is zero because it is always in the form of closed loop. Magnetic flux closed loop में zero होगी, but किसी भी एक single surface को define कर ही सकते हैं. What is the definition of flux? Kati, what is flux? Number of field lines. Yes, absolutely. Similarly, magnetic flux will be the number of magnetic field lines passing perpendicularly through a surface. The number of magnetic field lines passing through a surface perpendicularly passing through a surface. So it is again. Sorry, Yes. बस एक general वो है. Last chapter का last topic Meissner effect था ना बस. Yes, last chapter का last topic Meissner effect था, और हमने कुछ उसके पहले कर रखा था, like tangent galvanometer, tangent log, relation magnetometer, वो हमने उसके पहले कर रखी. So magnetic flux is similar to the electric flux, the total number of magnetic field lines. Obviously this will not be for a magnet. This magnetic field lines cannot be produced by a magnet. किसकी magnetic field line ऐसी हो सकती है? Any particular reason where magnetic field lines can be this type? Solenoid के अंदर, inside a long solenoid, magnetic field is uniform. So इसमें अगर हम कोई surface रखते हैं, then magnetic field, just like it was electric field, E dot A is electric flux. Similarly, B dot A will be the magnetic flux. Magnetic flux वैसे denote करने के लिए B represent कर सकते हैं, but otherwise it is clear by the unit. Symbol is same. Phi is the magnetic flux. Phi is also the electric flux. Total number of electric field lines is passing through a surface is called electric flux. Total number of magnetic field lines passing perpendicularly is called magnetic flux, and unit will be Tesla meter square. इसमें A is the area vector. Area vector is always perpendicular to the area. So with respect to the magnetic field, if an area is inclined at an angle theta, theta is the angle between magnetic field vector and area vector. किसी भी एक single surface है, magnetic flux will always be there. It will not be zero. It was zero only in the case of closed loop. So B dot A will be VA cos theta, magnetic flux passing through that surface. So ये B हटा देते हैं understanding के लिए. Tesla into meter square is also called as Weber. Weber is the another unit of. It is BA times cos theta.
So magnetic flux is Weber, or so there is another name for magnetic field. Magnetic field को हम ये जो A cos theta, अगर आपको याद हो हमने कुछ define किया था, something like projection area. So this A cos theta is also called as A perpendicular, जो कि magnetic field line के perpendicular होता है. That's called projection area. So another term for magnetic field is also called as magnetic flux per unit area. Magnetic field का another name is magnetic flux density. The magnetic flux passing per unit area, magnetic flux passing per unit area through any surface is also same as magnetic field. So another unit of magnetic field is Weber per meter square, which was Tesla earlier. So किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में the magnetic flux is B dot A or BA cos theta. If it is not a uniform magnetic field, then we'll have to integrate over a small area vector dA. So exactly similar to that of electric flux, magnetic flux is defined as, but अगर कोई closed loop ले लेंगे, then it is going to be zero. Integration of B dot dA for any closed surface is always zero. That we had done. Right? सर एक डाउट सर एक डाउट सर सेकंड डायग्राम में एक बार समझा दो किसका है. सेकंड डायग्राम में पहला डायग्राम ये वो एरिया परपेंडिकुलर था, वो थोड़ा टिल्ट हो गया एट एन एंगल थीटा. पहले वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स इज B into A. In the second case it is B into A into cos theta. Magnetic flux is always number of field line. अगर कोई closed surface ले लेंगे तो zero हो जाएगा. For any closed surface it is going to be zero. So magnetic flux is a way to represent the magnetic field lines. How many magnetic field lines passes through a surface? There is another unit called Maxwell, which is the CGS unit. 1 Weber is 10 raised to power 8 Maxwell. Excuse me, sir. Yes. Sir, second वाले में 8 use ना. थोड़ा सा तेज बोलो कि मुझे आवाज क्लियर नहीं होगी. सर सेकंड वाले में एरिया वेक्टर यूज करने को दिखा रहे हैं ना. In the diagram. Yes sir. Yes, in the diagram this is an area जो पहले perpendicular था, इसका area vector इसके perpendicular. Now this has tilted, so area vector is also tilted by an angle theta. ठीक है सर. The angle between magnetic field and area vector is theta, so it will be represented as VA cos theta if it is a uniform magnetic field. If it is a uniform magnetic field. If non-uniform magnetic field or if the surface is something curved surface or irregular surface, तो हम इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते थे. दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म बहुत कम जगह पर ही होती है. जैसे वन ऑफ देम वाज इनसाइड ऑफ अ सोलेनॉइड. इनसाइड टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म? नो, इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, but direction wise it keeps on changing. So if magnetic field is non-uniform, किसी वायर की मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, किसी सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. देन वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA. आई एम नॉट पुटिंग हियर दिस सर्कल, क्योंकि सर्कल लगा देंगे तो हमेशा जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज देन इट विल बी अ क्लोज्ड लूप मैग्नेटिक फ्लक्स. So for example, suppose there is an infinitely long wire carrying current I. There is an infinitely long wire carrying current I. इससे R distance पे A side length का कोई square loop रखा हुआ है. This is not having a current. This is just a hypothetical square loop of side length A. Calculate the magnetic flux passing through this square loop. Magnetic field of a uniform wire is not uniform. तो हम ये फॉर्मूला B into A नहीं यूज कर सकते, because the magnetic field will be changing with the distance. X distance पर एक छोटा सा surface लेंगे, a very small area, which will be considered in the form of rectangular strip having thickness dx.
क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर। वो प्लेन सरफेस वाले हमने नहीं लिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर I + 2j + 3k, एरिया को कैलकुलेट करेंगे वेक्टर की फॉर्म में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स for a constant magnetic field for a plane surface. If it is non-uniform magnetic field, or if the surface is non-uniform, not a plane surface, then we have to do the integration only. Calculate the total magnetic flux passing through the square loop as shown in this diagram due to the calculate the magnetic flux passing through the square loop. At a distance x, एक छोटे से स्ट्रिप ले लेंगे जिसकी थिकनेस है dx. Calculate the magnetic flux through the small area, and then we integrate for the limit on x. So this is a square loop. Consider ये सब लिखने की जरूरत अब है नहीं because now the paper is MCQ at least for the part 1. But for your understanding, हमने एक छोटा सा rectangle ले लिया है, small rectangle at a distance x from the wire. तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कहाँ पे इंटीग्रेशन करना है और कहाँ पे नहीं करना है. Magnetic field uniform, then we can directly calculate. If magnetic field is non-uniform, then we have to integrate by. Excuse me, sir. Sir, एक बार Yes, बता दो Amit. dx क्या है? बेटा जब भी हमें इंटीग्रेट करना होता है तो हम x is a distance जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड द थिकनेस जैसे x के आगे जो छोटी सी डिस्टेंस लेते हैं दैट इज dx. If we are Yes. measuring something on the angle at an angle of theta, we consider a small differential theta. If मैं we are पूछ रहा था कि considering ये बीच में कुछ नहीं है, बस हम सेंटर से वो ले रहे हैं ना, क्या कहते हैं सेंटर नहीं, हम वायर से ले रहे हैं, वायर से डिस्टेंस ले रहे हैं, वायर से, because there is magnetic field because of what? Because of this wire only. जो एक्सटर्नल वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में this square loop is placed. Magnetic field due to this infinitely long wire वो अंदर की तरफ होगी. So magnetic field is inside but it is not a uniform magnetic field. So हम B into A square नहीं कर सकते डायरेक्ट. That's why we need to integrate. छोटे छोटे स्ट्रिप्स पे सब पे अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करके then we have to integrate. इंटीग्रेट करने के लिए पहले एक फंक्शन बनाना पड़ता है, डिफरेंशियल फंक्शन. टू मेक दैट डिफरेंशियल फंक्शन वी हैव कंसीडर्ड स्मॉल स्ट्रिप एट अ डिस्टेंस x ऑफ थिकनेस dx. राइट. जब भी हमें डिफरेंशियल फंक्शन बनाना होता है वी हैव टू चूज अ स्मॉल डिफरेंशियल वेरिएबल. सो यहाँ पर छोटा सा रेक्टेंगल लेंगे, d phi is small magnetic flux, that is B into dA. Area of the rectangle is length into breadth. और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था Rn? इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन by 2 pi. फिर से बोलो क्या कहना चाह रहे हैं. ऐसे क्या यार सीधे. हाँ तो सीधे याद करो यार, इतना नीचे 4 पाई ओवर 2 पाई कट जाएगा. म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. R here is x. हाँ अच्छा, वेरी गुड. म्यू नॉट I by 2 पाई R into A dx. x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? x is starting from R to R plus A. Integrate on both the side. Mu naught constant, I constant, A constant, 2 pi constant. Integration of 1 upon x dx. 0 to 5. On the other side, it will be R to R plus A. 1 upon x का integration ln x. Log is little
Incorrect. Mu naught I A by 2 pi. It will be ln x. Limit लगाओगे तो r plus a minus r, and log m minus log n is log m by log n. So this is the magnetic flux passing through this square loop. So ऐसे हम किसी भी वायर, किसी भी नॉट वायर, किसी भी लूप, क्लोज लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं. वायर से तो फ्लक्स होगा ही नहीं. वायर इज नॉट एन एरिया. It has to be always in the form of closed loop to calculate the magnetic flux. सर ये लेंथ और ब्रेथ दोनों तो ए होनी चाहिए, तो आपने नीचे ये क्या लिख रखा है स्क्वायर लूप के जो लेंथ आपने लिया है? तो लेंथ ए ही लिख रखा है सर ये लिखा है. अच्छा ये लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसकी कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये स्टार्ट कहाँ से रहा वायर के लिए? It is starting from x equals to r up to r plus a. So the limit is r to r plus a to calculate the total magnetic flux passing through the square loop. Right? Integration क्यों किया? Why not b into a? देख तो कम है, वो हमने नहीं लिया है, पहले थोड़ी गिवन था. Why are we integrating? सर चेंज होता रहता है, मतलब डिस्टेंस. नहीं, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ ऑफलाइन. Why are we integrating? कैसे पता पड़ा इंटीग्रेशन करना है? dx दिया गिवन थोड़ी था. dx तो मैंने लिया बाद में. x पे dx छोटा सा एक इंटीग्रल है, क्योंकि इंटीग्रेट करना था इसलिए dx चाहिए था. अरे why we integrate कैसे पता पड़ा? कैसे पता पड़ेगा इंटीग्रेट करना है या सीधे b into a करना है? क्यों? क्योंकि जितनी भी स्ट्रिप लेंगे हम छोटी छोटी सबकी डिस्टेंस चेंज हो रही है. डिस्टेंस चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा. इसलिए वी हैव टू इंटीग्रेट. जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है देन वी नीड टू इंटीग्रेट. कांस्टेंट होता है तो v into a. नाउ इन दिस लूप Faraday did some experiment and Faraday was expecting a result. अगर हम किसी कॉइल में, जैसे कॉइल में करंट होती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, and that magnetic field is exactly similar to that of a magnet. Every current carrying loop, closed loop, behave as a magnetic dipole, which we have done in the previous chapter. So he was using exactly reverse logic. अगर किसी मैग्नेट को हम रखते हैं कॉइल के पास, coil will have a magnetic field passing through it. It should also have a current developed. So this is the Faraday experiment. जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं. Faraday का लॉजिक ये था कि करंट पास करने पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सो मैग्नेटिक फील्ड पास करने पे करंट भी होना चाहिए. That was the expectation that Faraday was expecting. So he used a circular coil as with a galvanometer. ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है. And he placed a very strong magnet near the coil, expecting that there should be some deflection in this coil, but ऐसा कुछ हुआ नहीं. Magnetic field is passing, magnetic field lines are passing, but still there is no deflection in the galvanometer when magnet is placed. So he got frustrated and he threw this magnet. तो जैसे उसने मैग्नेट को फेंका, it started moving. Then suddenly there was a deflection in the galvanometer coil. So when the magnet started moving, then galvanometer showed deflection on one side, which means now current has appeared into the circuit. If magnet is moved away, then again there is a deflection, but that deflection is in opposite direction. So it confirms that current is associated with the magnetic field or magnetic flux, but just by passing a magnetic flux or magnetic field line, you cannot produce current. It is the change in the number of magnetic field lines, or it is the change in the magnetic flux. So if magnetic flux passing through any coil or any circuit changes with time, then only there will be a current. And the direction of current will also depend how the magnet is moving. ठीक है? करंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं प्रोड्यूस हो रही है, करंट मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, which is the change in magnetic flux.
So when it is moved away, the galvanometer showed deflection in opposite direction. This was the galvanometer experiment on passing the current, on passing the magnetic flux, or there is no current, but when the magnetic flux changes with the period of time, and if current it is changed faster, if it is changed faster, then again there will be some opposite, more current will flow. Right? So Faraday's experiment, kya tha? What is the final conclusion? If there is a magnetic flux changing with time, passing through a closed loop, it will have an induced EMF developed. EMF का मतलब potential, potential है तो current होगी, और current है तो उस potential को हम electromagnetic, this phenomena is called electromagnetic induction, and that EMF induced or EMF developed is called induced EMF. EMF का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस किसमें होता है? बैटरी में. So हमने बिना बैटरी के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी. This is one of the source by which we produced a current or electrical energy, which is used in dynamo. DC जो dynamo होता है जनरेटर, उसमें ऐसे ही कुछ मैग्नेट अंदर बाहर होता है, और वाइस वर्सा मैग्नेट अपनी जगह पे होता है, कॉइल रोटेट होता है. So even if magnet is stationary, coil is moving, then also there will be same effect. If both are moving in same direction with same velocity, then again no deflection and no current. So it is the relative motion, or it is a relative change in the magnetic flux that causes the induction. Please write, when magnetic flux passing through a closed loop changes with time. When magnetic flux passing through a closed loop changes with time, it induces an EMF in the circuit. Passing It through a closed induces, changes with time, it induces an EMF called as induced EMF, and the phenomena is called electromagnetic induction. And the phenomena is called electromagnetic induction. Next line say, if the circuit is closed, a current will also appear in the circuit called as induced current. पोटेंशियल तो होगा ही होगा, करंट है या नहीं वो डिपेंड करता है सर्किट क्लोज है या नहीं. राइट, मींस अगर हमने सिर्फ ऐसे लिया, नॉट कनेक्टेड एंड मैग्नेट इज मूविंग, देन आल्सो देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड. एक टर्मिनल नेगेटिव और एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, बट करंट नहीं होगी बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट लूप. सर्किट में करंट होने के लिए इट हैज टू बी अ कंप्लीट पाथ, only then the electron will flow in the complete circuit. Right? Faraday's law of electromagnetic induction. This was, so experiment में और भी बहुत सारी चीजें थी. मैग्नेट को रेस्ट पर रखो, कॉइल को मूव करो, then also the same effect. दोनों को मूव करो अगर सेम डायरेक्शन में, then no EMF is induced. दोनों को अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, then double EMF is induced. So that means it also depends upon how that magnetic field is changed. मैग्नेट को फास्टर पास लाएंगे, then more current is induced, more EMF is induced. So it depends upon the rate of change of magnetic flux. So Faraday का जो first law था for electromagnetic induction, this is the statement only जो अभी हमने लिखा है कि जब भी किसी coil से पास होने वाला magnetic flux change होगा, then an EMF is induced, which lasts as long as flux keeps on changing. जैसे सडनली सपोज हमने स्टॉप कर दिया, मूव करते करते मैग्नेट इज मूविंग एंड सडनली स्टॉप्ड, इंस्टेंटली दैट ईएमएफ विल बी गॉन. राइट, सो ऐसा नहीं कि एक बार एस्टैब्लिश होके वो रहेगा आगे. सो फर्स्ट लॉ इज, जो अभी लास्ट स्टेटमेंट लिखा है वही है,
बस में सिर्फ इतना सा पार्ट और ऐड हो गया, दैट विच लास्ट as long as the flux keeps on changing. जैसे फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा वैसे ही करंट विल बिकम जीरो एंड there will not be any EMF, there will not be any. So first law I'm not writing in the same law. Second law, Faraday's second law is तो एक बार फर्स्ट लॉ एक बार रिपीट कर दो कैसे लिखना है. when magnetic flux linked with a coil when magnetic flux linked with a coil changes with time, it induces an EMF. It induces an EMF which lasts as long as flux keeps on changing, which lasts as long as flux keeps on changing. ठीक है, मतलब मैग्नेट मूव करते रहोगे तो रहेगा, मैग्नेट स्टॉप सडनली एट द सेम इंस्टेंट there will be a change of, there will be induced current, induced EMF will be gone. Second law talks about how much EMF is induced. So the magnitude of the magnitude of EMF induced is equal to rate of change of magnetic flux with time. The magnitude of EMF induced is equal to the rate of change of magnitude of EMF induced is equal to rate of change of magnetic flux. If it is at an instant, it will be d phi by dt. If it is over a period of time, delta t, it will be average total change in flux divided by total time taken. किसी डेल्टा टी टाइम में जब एवरेज ईएमएफ निकालेंगे, total change in flux divided by total time taken, that will be EMF induced. Instantaneous के लिए तो flux should be known as function of time. How flux is changing with a function of time. So Faraday law, इसमें एक word हमने use किया, that is flux linked, और पहले लिखा था magnetic flux passed. क्या difference है? Flux passing through a coil and flux linked with a coil. कोई difference है English wise? सर हम एक में डलवाते हैं मैग्नेटिज्म डलवाते हैं और दूसरे में खुद ही हो जाता है, मतलब इंड्यूस होता है, लिंक्ड, मतलब जैसे अगर करंट हमने डाला तो खुद ही इंड्यूस होगा. नहीं, हमने करंट डाला नहीं, हमने तो सिर्फ एक मैग्नेट रख दिया पास में, somehow we सर तो तब वो होगा, क्या कहते हैं, पहला वाला मतलब लिंक्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पास किया जाएगा. देखो अगर एक सिंगल लूप है तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग हियर. इसमें अगर फाई है, दिस इज द टोटल फ्लक्स. अब हमने इसकी जगह पर एक लूप ले लिया ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, then we say that magnetic flux linked with the coil. Flux linkage, हर एक टर्न में अपनी अलग अलग फ्लक्स है जो एक दूसरे से लिंक हो जाती है, and then flux linkage or total flux linked will be n times phi. Flux passing through a loop, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना. Passing through each loop, और यहाँ पर एक ही लूप है अगर, then it is phi. समझ आ रहा है ना डिफरेंस? वन सिंगल लूप phi, n नंबर ऑफ लूप्स, वो आपस में लिंक हो रहे हैं क्योंकि सारे के सारे फ्लक्स they will be in the same direction from left to right, where n is total number of turns. So इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे. If it has n, if loop has n number of turns, then the total EMF induced will be n times d phi by dt. तो वो अपनी कुछ करेगा, बढ़ नहीं जाएगा, वो हम पढ़ेंगे भी चैप्टर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा या ऊपर वाले को कैंसिल करेगा,
कुछ कुछ होगा. Yes. All three possibilities. It can completely cancel out, it can decrease, it can increase. तो the resultant होगा उसको count करें. Then there will be two different terms we will be using: self-induced EMF and mutually induced EMF. एक खुद की करंट का और एक बाहर की वजह से, जैसे हम एनर्जी में यूज करते थे सेल्फ एनर्जी एंड म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी करते थे. क्या तो होगा नहीं. सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फीयर क्या था फॉर्मूला? सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड चार्ज स्फीयर. एनीवन? ऐश्वर्या, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर. व्हाट इज सेल्फ एनर्जी बाय द वे? किसी स्फीयर की सेल्फ एनर्जी क्या होती है? साफ, बिल्कुल ब्लैंक. यार हाथ हटाओ. रिलैक्स. अब बताओ सेल्फ एनर्जी क्या होती है? नहीं क्या होती है तो बताओ, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं. वेरी गुड. सेल्फ एनर्जी किसी भी चार्ज के लिए या किसी भी बॉडी के लिए, जैसे हमें सपोज सॉलिड स्फीयर बनाना है, किसी भी सिस्टम को कैसे बनाते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? इन्फिनिटी से, बिकॉज एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ एनीथिंग इज अननोन व्हिच इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से चार्जेस को लाके इस स्फीयर को बनाने में the total work done in bringing the charges from infinity and making this sphere is defined as its own self energy. जो स्फीयर के लिए था 3/20 q square by pi epsilon naught r. ये हमने डिराइव किया बाय द वे क्लास में. किसी होलो स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए इन्फिनिटी से लाके चार्ज होलो स्फीयर पे रखने में कितना वर्क करना पड़ता है, पॉइंट चार्जेस को 1 by 1 लाके, that is defined as self energy of a sphere, spherical shell, which is q square by 8 pi epsilon naught r. जिसको हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, because if we consider this to be a sphere, sphere की एनर्जी होती है q square by 2c and c is 4 pi epsilon naught r. राइट. तो ऐसे यहाँ पे भी हर जगह पे दो अलग तरह की एनर्जी होगी, एक अपनी और एक बाहर वाले की वजह से. सेल्फ एनर्जी एंड म्यूचुअल एनर्जी, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन. अरे बाइंडिंग एनर्जी जैसा हुआ. बाइंडिंग एनर्जी सिस्टम के लिए थी, उसी को हम किसी एक बॉडी के लिए बोलते हैं. बाइंडिंग का मतलब दो चीजों को बांध के रखना. यस सर. ये ग्रेविटेशन में भी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है, सब जगह है. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब दो अलग अलग पार्टिकल, अलग बॉडी एक दूसरे के साथ बंधी हुई है बिकॉज ऑफ सम फोर्स, सम एनर्जी. ओके ये तो सर. किसी सिस्टम को बनाने की एनर्जी है. स्फीयर कैसे बना, अपने आप तो नहीं बना होगा. इन्फिनिटी से कुछ 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 करके देन वी मेक अ सॉलिड स्फीयर. ओके, सो दिस इज द टोटल Faraday सेकंड लॉ. थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन करेंगे. इफ लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स then the total EMF induced will become n times, क्योंकि सभी में सेम डायरेक्शन का EMF induced होगा, so that will be multiplied by n. फ्लक्स लिंकिंग, फ्लक्स लिंकेज जैसे सोलेनॉइड के साथ हमेशा वर्ड यूज करेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड. कि सोलेनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ऑलवेज. फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल. So this is something new and strange. क्यों strange? What is strange about electromagnetic induction? उस एंगल से सोचा नहीं अभी. Let's try to understand. पहले कॉइल रखा हुआ था वेस्ट में, मैग्नेट रखा हुआ था वेस्ट में, दोनों में कोई एनर्जी नहीं. हमने कॉइल को फेंका, मतलब हमने कॉइल को मैग्नेट को फेंका, मैग्नेट को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, और जैसे हमने उसको वेलोसिटी दी वैसे ही कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो गई, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई. आर यू गेटिंग दिस? कॉइल रेस्ट, मैग्नेट रेस्ट,
कॉइल के पास कोई एनर्जी नहीं, मैग्नेट के पास कोई एनर्जी नहीं, हमने एक को एनर्जी दी और दूसरे में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, which means we have violated the law of conservation of energy. एक एनर्जी तभी आती है जब दूसरी एनर्जी कम हो, यहाँ पे दोनों की एनर्जी बढ़ रही है। अंडरस्टूड? दिस फिनोमेना जो हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक दोनों रेस्ट में थे दोनों में कोई एनर्जी नहीं थी, देयर वाज नो एनर्जी। हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, कोई भी एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी इट इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट ऑफ अनदर एनर्जी, सो सम एनर्जी हैज टू रिड्यूस और डिक्रीज। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? समझ गए ना? कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। एनर्जी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट्स द लॉ। एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसकी एनर्जी भी पहले से इंक्रीज हो गई, इसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, सो कहाँ से आ रही एनर्जी? दिस मींस वी हैव मेड अ परपेचुअल मोशन। हमने क्या किया, हमने ब्रेक दिया, खत्म, तो खड़े बाहर से, वो तो दे दी उसी के पास है ना, हमारी थोड़ी है। हमने तो वो तो हमने जो दिया उसमें हो गया, वर्क डन बाय अस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गिवन। अब तो हम खड़े हैं, मजे ले रहे हैं। व्हाट इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम दिस? नहीं समझे? क्वेश्चन समझ गया ना? क्वेश्चन में कुछ तो दिख रहा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड। हमने एक ऐसी अरेंजमेंट बना ले जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो इट विल बी अ परपेचुअल मोशन। हमने एक बार दिया एनर्जी तो बनी गई, बनती जा रही बनती जा रही, विच इज नॉट द रियल केस। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कम हो सकती है बट तो हम नहीं सकते। एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन दिस। क्वेश्चन क्लियर ना? ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन दिया था लेंज ने। लेंज gave another law on the basis of which we can explain, understand this, and we can also determine, we can also decide what will be the direction of current established in the loop. Lenz proposed if there is change in magnetic flux through any coil or any loop, it will always oppose the cause. जिस भी रीजन की वजह से उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसको हमेशा अपोज करने के लिए प्रोड्यूस होगा। इसमें किस रीजन की वजह से फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ मैग्नेट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कॉइल, राइट? तब तक नहीं था, रुका हुआ था, डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम थी, नो ईएमएफ नो करंट। बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्रोच ऑफ मैग्नेट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट और ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगी कि उसको पास आने से रोकेगा, राइट? कैसे रोक सकता है? वैसे बढ़ा थोड़ी रहे, हम तो पास लेके आ रहे हैं। इसने अपने अंदर करंट ऐसे इंड्यूस की बिकॉज एवरी करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए मैग्नेट। एक साइड से देखने पे नॉर्थ पोल बनता है, एक साइड से देखने पे साउथ पोल। इसका वो वाला पोल ही नॉर्थ पोल बन जाएगा जो मैग्नेट के साइड में है। तो जैसे मैग्नेट इसके पास आ रहा है, जितना पास आ जाएगा ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, देयर विल बी सम रिपल्सिव फोर्स। ये रिपल्सिव फोर्स इसकी काइनेटिक एनर्जी कम करेगा और जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी ही मैग्नेटिक एनर्जी, सॉरी उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इट इज नॉट द वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। समझ आया? लेंज लॉ क्या बोलता है? जो भी रीजन हो, अभी और बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, व्हाट एवर रीजन जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज। जैसे मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे अगर, सेम केस इफ दिस नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड अवे, नॉर्थ को दूर जाने से रोकने के लिए नाउ दिस पोल विल बिकम साउथ पोल। सामने वाला पोल साउथ पोल बन जाएगा, वो अट्रैक्ट करेगा, अगेन देयर विल बी अ फोर्स अपोजिट टू वेलोसिटी। अपोजिट में फोर्स होगा तो वेलोसिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज produced in the is converted in the form of electrical energy। इससे हम इस कॉइल के अंदर या लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन भी डिसाइड कर पाते हैं। प्रिंस, मिस्टर प्रिंस, प्रिंस, class, sister is here।
ओके चलो कोई बात नहीं। कौन बताएगा? मिस्टर आर्यन। करंट अगर किसी लूप में, सॉरी कोई फेस अगर किसी लूप का साउथ पोल दिख रहा है, उसमें करंट कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। वेरी गुड। यानी अगर हम इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, जब नॉर्थ पास में आ रहा है तो मैग्नेट के साइड वाला फेस तो नॉर्थ बन जाएगा और अपोजिट साइड वाला साउथ बन जाएगा। सो फ्रॉम द आई पोजीशन द करंट डायरेक्शन इन दिस लूप विल बी अपीयरिंग क्लॉकवाइज। दूसरे वाले में सर नॉर्थ उल्टा दूर नहीं जा होना रहा चाहिए। है, सर उल्टा नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से तो साउथ दिख रहा है ना, यस सर। साउथ पोल में क्लॉकवाइज करंट होती है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल होती है। रिवाइज द नोट्स बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज करंट तो थंब बाहर यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है फ्रॉम दी दैट फेस जिधर से वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और नॉर्थ पोल से करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती है। करंट एंटी क्लॉकवाइज दैट फेस बिकम्स नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज करंट दैट फेस बिहेव्स एज साउथ पोल। सो दो तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली। लेंज लॉ का बेसिस क्या है? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाट डज इट से? that induced EMF or induced current always opposes the cause. मैग्नेट के दूर जाने से अगर हो रहा है तो पास लाने की कोशिश करेगा, मैग्नेट को पास आने से हो रहा है तो दूर लाने की, दूर रिपेल करने की कोशिश करेगा। एंड और भी बहुत सारे केसेस में we will understand the direction, we can decide the direction of current with the help of Lenz law only. Arun, समझ आ गया? ओके सो मैग्नेटिक सेकंड वाले केस में आई पोजीशन से देखोगे तो नॉर्थ पोल दिख रहा है यानी करंट इसमें दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। इधर से नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज राइट द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ। The direction of induced current slash EMF. The direction of induced current slash EMF is such that it always opposes the cause which produces it. Next line say if magnetic flux increases with time, the current produces magnetic field opposite to external field. If magnetic flux increases with time, the induced current produces magnetic field opposite to external field and vice versa. मतलब अगर flux decrease हो रहा है तो support Opposite करने to? के लिए opposite to external magnetic field and vice versa. Vice versa का मतलब अगर magnetic flux decrease हो रहा है तो उसको increase करने के लिए same direction में magnetic field प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल जब मैग्नेट का पास आ रहा है, नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग, तो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इंक्रीज हो रही है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। इसको अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? मैग्नेट पास आ रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, उसको कम करने के लिए कॉइल ने अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर दी। सेकंड वाले केस में मैग्नेट इज मूविंग अवे, सो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग विद टाइम। एज अ रिजल्ट इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको इंक्रीज करने के लिए इट विल आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। So when flux increases, then induced current increases, then induced current decreases by producing magnetic field in opposite direction. When flux decreases with time, induced current increases by producing in the same direction.
right? The basis of Lenz law is law of conservation of energy. अगर हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लाएं तो क्या नहीं होगी फिर करंट प्रोड्यूस? If magnet is moved with a constant velocity, then also there is change in flux, then also there will be current. फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी इसमें लॉजिक क्या यूज किया हमने? फेंक दिया मैग्नेट को, वेलोसिटी हमने दी, अब वही रिपीट करें. This says this particular situation was magnet is thrown. जैसे मैग्नेट को फेंका, अपोजिट में फोर्स आया, फोर्स ने वेलोसिटी कम की, and we are using the logic that the loss in kinetic energy is equal to electrical energy developed. Second scenario, मैग्नेट को पकड़ के हम constant velocity से लेते आ रहे हैं. If magnet is moved with constant velocity, then also there is change in flux, then also there will be EMF induced. एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसमें फोर्स लग रहा है उतना ही बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा. करेक्ट, करेक्ट. इन दैट केस अगर हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आ रहे हैं तो नेट फोर्स हैज टू बी जीरो. नेट फोर्स जीरो का मतलब जितना ये फोर्स लग रहा है उतना ही हमें बाहर से लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स ने जो वर्क डन किया है, द वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड. करेक्ट. ओके, सो अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए. टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड ईएमएफ वी यूज लेंज लॉ. ये तो दो छोटे छोटे एग्जांपल में समझ आएगा होंगे. मैग्नेट का नॉर्थ पोल आएगा तो रिपेल करने के लिए उसके सामने नॉर्थ पोल बन जाएगा. इफ मैग्नेट नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे तो वो साउथ बन जाएगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए. एंड Similarly, we will see other scenario also. Magnetic flux का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या थी? फ्लक्स का फॉर्मूला अभी लिखा है. मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला इज B into area of projection. B into area of projection or B into A into cos theta. So there are three possible ways by which the magnetic flux can change. अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? कौन सा चैप्टर? Electromagnetic connected row. What is the formula for magnetic flux? B A cos theta. B is magnetic field, A is area and theta is the angle between magnetic field and area. हम अगर magnetic field change कर रहे हैं टाइम के साथ, then also flux changes. Area change होगा टाइम के साथ, then also flux changes. Angle between them is changing, then also it is changing with time. So question सिर्फ इतना है, find the direction of induced current in the following using the Lenz law. Find the direction of induced current in the following diagram, following situation by using Lenz law. फ्लक्स और हम EMF बाद में कैलकुलेट करेंगे. अभी सिर्फ ये अपोज वाला लॉजिक लगा रहे हैं आपको. अपोज करेगा तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होनी चाहिए. फर्स्ट, there is a magnetic field into the plane which is decreasing with time. If this magnetic field is decreasing with time and there is a circular loop placed, find the direction of current. Second, करते जाओ, दिमाग लगाते जाओ. फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. In this second scenario, magnetic field is constant, it is not changing. इसके अंदर एक लूप रखा हुआ है, that loop is circular loop. इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है.
radius is increasing with time. Third, इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल के दोनों सर्कल के डायमीटर के एंड से पकड़ के उसको पुल कर रहे हैं. दिस इज अ सर्कल, इट इज बीइंग पुल्ड फ्रॉम बोथ द एंड बाय सम फोर्स. कैलकुलेट द मैग्नेटिक. ओके, चलिए करते हैं फिर. और लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the method of finding the flux. में क्या था, एक सर्कुलर लूप है, उसको दोनों एंड से पकड़ के खींच रहा है उसको, pulled from the diametrically opposite end. In the first case, flux is increasing, decreasing. Decreasing. फ्लक्स डिक्रीज होता है तो करंट इंड्यूस होती है एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करने के. एक्सटर्नल फील्ड किधर है? क्रॉस का मतलब इनसाइड. एक्सटर्नल फील्ड इज इनसाइड. उसको बढ़ाने के लिए करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होनी चाहिए कि उसकी फील्ड भी इनसाइड हो. It should be clockwise. So current should be induced clockwise so that the magnetic field produced by this induced current will be in the direction of external field. क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है तो उसको अपोज करने का मतलब उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी. सेकंड में क्या हो रहा है? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम करने के लिए अगेन करंट इंड्यूस होगी. सो व्हिच विल बी एंटी क्लॉकवाइज होगी. एंटी क्लॉकवाइज होगी तो करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर आती है? उसकी नहीं, इधर. कहाँ? तो उधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है. उसको बढ़ाना है, उसको कम करना है, उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है. डिक्रीज करने के लिए फील्ड सेम डायरेक्शन में आनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट. अपोजिट मतलब किस डायरेक्शन में? In this diagram, it is out of the plane or into the plane. Opposite का मतलब out तो वो खुद है. डॉट का मतलब out of the plane. This magnetic field is already out of the plane. इसको कम करने के लिए into the plane magnetic field induced current को produce करनी है. फिर से explain करो. बाहर आ रही है जो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है. उसको डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस करंट अंदर की तरफ मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा. इसलिए इट शुड बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करंट इन द सेकंड केस शुड बी क्लॉकवाइज क्योंकि बाहर की तरफ वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है. उसको कम करने के लिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए. सो इनसाइड मींस इट शुड बी क्लॉकवाइज. थर्ड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन में एक सर्कल है, फ्लेक्सिबल समझ लो. उसके दोनों एंड को पकड़ के हम खींच रहे हैं. क्या बन जाएगा सर्कल से? एलिप्स. वो तो मतलब एंड में जाके बनेगा. अभी क्या बनेगा? ये एलिप्स बनेगा. इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है. केवल एरिया समझना है आपको. एरिया इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम. अगर हम सर्कल को पकड़ के खींच के एलिप्स बना देते हैं तो पेरीमीटर सेम रहेगा यार, एरिया थोड़ी सेम रहेगा. वायर की लेंथ उतनी रही, शेप तो चेंज होता जा रहा है. डिक्रीज, इंक्रीज. यस मेयर, डाउट क्या है बताओ? मेयर डोंट सी. समझ गए? हाँ ठीक है, प्रोसेस कर लो कोई बात नहीं.
एक सर्कल है, उसके दोनों एंड से पकड़ के उसको पुल कर रहे हैं, so that it is now converting into an ellipse. सर्कल का एरिया ज्यादा था, एलिप्स का एरिया कम हो गया, और पुल करोगे और कम हो जाएगा, और पुल करोगे तो जब स्ट्रेट लाइन बन गया तो जीरो ही हो गया सीधे। स्ट्रेट लाइन के अंदर का एरिया जीरो। Area is decreasing, flux is decreasing, therefore induced current will produce magnetic field in the direction of external field, which is into the plane, so it should be clockwise in this case also. Loop is pulled outwards from diametrically opposite point. अमन समझ आ रहा है? यस सर, थोड़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। यस सर। अगर हम लूप को पकड़, ये वाला नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब पहले दोनों पार्ट नहीं है। सबसे पहले दो तो आ गए, ये वाला थोड़ा समझ रहा हूँ मैं। सर्कल को एलिप्स बनाओगे तो एरिया छोटा हो जाएगा। कॉमन सेंस है वैसे तो, नहीं समझ में आया तो और खींच लो, मेक इट स्ट्रेट लाइन, पकड़ के खींचना है, like this, then this, and finally it will be a flat line. इसके अंदर का एरिया जीरो, पहले था एरिया, अभी जीरो हो गया। एरिया इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, एरिया डिक्रीज हो रहा है, सो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। उसको इंक्रीज करने के लिए एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हैज टू बी इंड्यूस्ड। सर पर आपने बोला जीरो हो जाएगा, तो मतलब एरिया फाइनली तो जीरो हो गया ना। यस सर, तो उसको करने का क्या फायदा अगर जीरो हो जाएगा तो? मतलब वो तो फाइनली हो गया। ड्यूरिंग दैट टाइम सर्कल से स्ट्रेट लाइन के बनाने तक, उस टाइम में तो करंट इंड्यूस होगी। यस सर, समझ गया मैं, रास्ते में कह रहे थे, बोलो। तो कोई वो उसका थोड़ी, रबड़ का थोड़ी है, मेटलिक वायर हम पकड़ के खींच रहे हैं। तो वो तो जीरो ही होता है ना, ये तो हमने पकड़ के लगाया है, अपने आप थोड़ी खींच रहा है। इज पुल्ड, किसी ने पकड़ा है इधर से और फिर पकड़ के खींचा है, समझ गए? जिस फोर्स की आप बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लगाती है। अभी तो वैसे कोई करंट थी नहीं पहले इसमें, बट सपोज अब करंट आएगा भी, क्लॉकवाइज करंट है, करंट इज क्लॉकवाइज, तो बाहर की तरफ जो करंट क्लॉकवाइज होने से इसका एरिया कम होने से कैसे रुकेगा? क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, श्रिंक हो रही है, फोर्स बाहर लग रहा है, अपोज कर रहा है, तो हर तरफ से बाहर लगेगा ना, तभी तो पुल कर रहा है। इट विल बी पुलिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। हम कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो उसको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है, राइट? ओके, नेक्स्ट। शादी समझ आ रहा है? कितना? 100%? 100% या कुछ है गुंजाइश? समझ आ रहा है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। सो नेक्स्ट, अभी हम इस पे थोड़ा ज्यादा इसलिए फोकस कर रहे हैं बिकॉज ये डायरेक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा है रिलेटिवली, बाकी चैप्टर इजी है, क्वाइट इजी। नेक्स्ट इज सो
This is some closed loop connected to a battery. When switch is just closed, when switch is just closed, in which direction the इसको बाद में करते हैं, अभी हम और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लीव इट। इसमें कुछ एक दो टर्म है जो अभी हमें समझने पड़ेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस, अभी हम ये मैग्नेट वाले टाइप ही लेते हैं। दिस इज अ वन कॉइल, दिस इज अनदर कॉइल। कॉइल 1 एंड कॉइल 2। जब हम कॉइल 2 में जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा? करंट विल इंक्रीज। पहले जीरो थी, पहले करंट जीरो थी, अभी जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे इट हैव इंक्रीज ऑफ करंट, और वो सपोज क्लॉकवाइज। इट इज अ क्लॉकवाइज करंट एंड दिस करंट विल बी इंक्रीजिंग व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज्ड। क्योंकि क्लोज करने के पहले जीरो थी, अभी सर्किट में करंट कुछ आ रही है धीरे धीरे, मींस करंट इज इंक्रीजिंग। क्लॉकवाइज करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके पास वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज वाली इंक्रीज हो रही होगी। उसको कम करने के लिए साइड वाले कॉइल में करंट किधर इंड्यूस हो जाएगी? अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज इंक्रीजिंग करंट है तो दूसरे लूप में एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, ताकि वो पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर सके या अपोज कर सके। ठीक है, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड और करंट इज इंक्रीजिंग, तो उस केस में द अपोजिट करंट विल बी, the current will be induced in opposite direction. Okay. We have some time left. Right. अगर ये clockwise decrease हो रही है, if this current is clockwise and decreasing, which means when switch is opened, उस टाइम पे क्या होगा? शादी आ नहीं रहा है। So second case is, इसी सर्किट में जब कॉइल 2 में हमने स्विच को ओपन कर दिया, when this switch is open, current जो clockwise थी, that clockwise current now will start decreasing with time. Clockwise तो current की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, but when switch is opened, सर्किट में कुछ करंट है जो थोड़े टाइम में जीरो होने वाली है। So that means this current is decreasing with time. Clockwise current अगर decrease हो रही है तो जैसी उसकी magnetic field है उसी डायरेक्शन में the other coil will produce its own magnetic field. Therefore, in the coil 1 also current induced will be clockwise. और ये म्यूचुअल इंडक्शन टाइप वाला ही है। इस कुछ सीन वो भी होता है जो भी मैंने इसके पहले डायग्राम बनाया था, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके लिए कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन कैसे होता है, अपनी खुद की करंट को भी अपोज करते हैं। करेक्ट, राइट। दिस इज क्लियर। दिस वन लास्ट एग्जांपल, ये दोनों लिख लो अगर डायग्राम से क्लियर है। वैसे तो नंबर एग्जांपल नंबर 4 एंड 5, इसमें मैग्नेट पास नहीं आ रहा है, साइड में जो कॉइल रखा हुआ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट। राइट, ओके। इफ करंट इज इंक्रीजिंग तो उसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट, इफ करंट इज डिक्रीजिंग उसको सपोर्ट करने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी। Third, sixth, example number 6.
In a magnetic field region, a loop is passing through with a constant velocity. There is a magnetic field region. A loop is passing through it. With a constant velocity. In which direction magnetic field will be? अंदर जाते टाइम, पूरा अंदर रहते टाइम, बाहर निकलते टाइम. When it is going in, flux is increasing or decreasing? Increasing. Increase को oppose करने के लिए opposite direction में current, opposite direction में magnetic field, यानी magnetic field होनी चाहिए बाहर की तरफ. बाहर की तरफ magnetic field का मतलब current should be anti-clockwise. So when it enters, current should be anti-clockwise. Mr. Vineet, जब ये पूरा अंदर है फिर when it is completely inside, then what will be the direction of direction of induced current? Khyati, when it is going out of the magnetic field, then flux increasing or decreasing? Clockwise, बाहर जा रहा है तो decrease हो रही है. Decrease हो रही है तो support करने के लिए same direction में magnetic field चाहिए. It should be clockwise when it is going out. When it is completely inside, फिर क्या है? Shreya, when it is completely inside, then what is the direction of induced current? सर ये वाला केस ज्यादा समझ में नहीं आया मुझे. बाहर से अंदर आ रहा है. यस सर. The area in which कोई magnetic चेंज नहीं होगा. अंदर की तरफ जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ. यस सर. एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड. अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड मतलब बाहर की तरफ फील्ड. When ये it समझ is में आ moving, जाता है. yes, when it is moving inside, B change नहीं हो रहा, A change नहीं हो रहा है, so flux is constant. Flux constant means there is no change. No change means there is no EMF. No EMF means there is no current when it is completely inside. जब बाहर निकलेगा तो फिर से फ्लक्स डिक्रीज होगी. फ्लक्स डिक्रीज होगा, उसको इंक्रीज करने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट. क्या इसे एक जगह पे 100% डिवोशन दो, भटकने से कुछ नहीं होता. ओके, थैंक यू.